आई थिंक फिल्म अच्छी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सैयारा का मतलब मुझे नहीं पता था इसके. और देखिए क्यों नहीं आती लोग, हिंदी आना बड़ी बात क्यों हो गई, मुझे वही नहीं आजकल समझ में आता. कई बार ये मैं सोचता हूँ, अचंभित होता हूँ इसी बात पर. अचंभित होता हूँ. इसीलिए आई एम सो प्राउड कि ये धड़क हिंदी में लिखा हुआ है. 1 अगस्त में बहुत मुझे खुशी हुई जब ये ऐसे जब पोस्टर आया. तो आप तो काम करने भी वाले थे, वो तब मौका नहीं मिला. लैला मजनू. मैं तो कब से उत्सुक हूँ. उत्सुक, तत्पर, तत्पर, उत्तेजित. I have also realized by doing like something like गहराइयाँ was quite intense. I feel सबसे ज़्यादा कॉमेडी ना intense sets पे होती है. Actually. और सबसे ज़्यादा सीरियस लोग कॉमेडी फिल्म पे होते हैं. हाँ. I worked with her twice and I've seen her. And she's also amazing. She's doing really well. पहला heartbreak when I was in 8th standard. My first heartbreak, I think when I was 21. Started late. Yeah. Started late, very late. What's there in the name? नाम में क्या रखा है? देखिए हम तो फिल्म कहानी सुन के करते हैं. I think जब पिक्चर चलती है तो कोई ज़्यादा एडवाइस नहीं देता. पिक्चरें नहीं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा एडवाइस मिलती है. Correct. This is our dream, so I think we are living our dream and I think we both are lucky to be able to pull this off. Even when we had intense scenes in the film, we were just cracking up पीछे कैमरा के. Team Ross और Team Rachel. What You are have to you? pick. I am Team obviously Rachel, ना? Obviously Rachel. I am Team Rachel. I have critics at home. I don't need to go out and be upset about other people criticizing my work. आपका ट्राइब है आपके आसपास that keep you grounded and Always. I keep him grounded. She keeps me very grounded. असली लाइफ में प्यार बड़ा ही नाजुक होता है, मासूम होता है. Yeah. I don't think that मुझे person मैं is. बिल्कुल रेड फ्लैग है, निकलो वहाँ से. मैं बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ है. ओहो. प्लीज निकलो यहाँ से. Hey guys, I'm Siddhant Chaturvedi Hi, this is Trupti Dimri. and You're watching us on Fever FM. with Stuti. Hi guys, this is Fever FM. Very excited to be chilling with two exciting stars. Everyone's talking about them. Everyone's waiting to watch their latest. बिल्कुल दिलों की धड़कनें बढ़ाते हुए धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी. Welcome to Fever FM. Thank you so you. much. Thank you. I have no idea how you shoot for a film without knowing what it's called. Which ये कैसे हुआ? आप दोनों हिस्सा बन गए. तो gut was convinced. Exactly. But how come you didn't know? कि शेक्सपियर ने कहा था ना. बहुत से ना. क्या कहा था चाचा नुआ ने? चाचा ने. What's there in the name? नाम में क्या रखा है? देखिए हम तो फिल्म कहानी सुन के करते हैं. नाम सुन के फिल्में भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो आप पता ही है कि फिर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता है. नाम कुछ भी हो, XYZ किसी किस्म का भी नाम हो, बट आई थिंक फिल्म अच्छी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सैयारा का मतलब मुझे नहीं पता था इसके. और देखिए तो नाम में आई थिंक कुछ नहीं रखा है. बस वही है कि हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि जो फिल्म बन रही है उसी हिसाब का, उसी टोन का, टू डू जस्टिस टू द फिल्म, ऐसी किस्म की ऐसा किस्म का कोई नाम हो. सो या कहानी अच्छी लगी थी. मुझे डायरेक्टर भी बहुत कमाल लगी थी. प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे थे. करण मेरी को एक्ट्रेस जो हैं वो इतनी खूबसूरत थी. मैंने बोला नाम करण तो बाद में होता रहेगा. शुरू करते हैं फिल्म. Okay, I saw a little leg pulling happening there. Tell me, when you're playing a couple on screen, how does the ice break happen? You guys, आप तो काम करने भी वाले थे, वो तब मौका नहीं मिला. लैला मजनू. मैं तो कब से उत्सुक हूँ. उत्सुक, तत्पर, उत्तेजित. बहुत ही बढ़िया. ये 3 नाम है, इसके रजिस्टर कर लो. ये अच्छे नाम है ये. या तत्पर. बहुत आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे. ये भी एक एडवांटेज होता है ना, राइट? फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दैट हिंदी बेल्ट जहाँ आप लैंग्वेज को समझते हैं, उसके न्यूएंस को समझते हैं. एडवांटेज नहीं, मुझे लगता है प्री रिक्विजिट है हिंदी फिल्म में काम करना. क्यों नहीं तो आती आनी लोग, चाहिए, हिंदी exactly. आना बड़ी बात क्यों हो गई, मुझे वही नहीं आजकल समझ में आता. कई बार ये मैं सोचता हूँ, अचंभित होता हूँ इसी बात पर. अचंभित होता हूँ. I love this. Fever FM goes national. संक्षेप में इन बताइए. शब्दों का प्रयोग जो किया जा रहा है उससे बहुत प्री प्रसन्नता रिक्विजिट है हो ना. हिंदी तो आनी चाहिए, तभी तो ग्रेविटास फील होगा आपको. एक होता है, एक शब्द है, उसका एक साउंड होता है, उसके अंदर क्या मीनिंग होती है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजन में उसी शब्द को कहा जाता है. सो आई फील वो तो बहुत बेसिक चीज हुआ करती थी एक समय, जब हम उफान में थे. He won't stop. I know, I'm going to give an emoji expression every time he says it. जब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चोटियों की उच्चारण, अरे यार अभी बस हो गया. ठीक है. तो जब एक समय था ना कि जब हमको ये सब मतलब ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हुआ करती थी. हम यही तो डायलॉग बोल बोल के बड़े हुए हैं. तो आई थिंक वो एडवांटेज नहीं है. आई थिंक वो ऐसा एडवांटेज लगने लगा है बिकॉज जो दौर चला है. This is a prerequisite. हाँ, इसीलिए आई एम सो प्राउड कि ये धड़क हिंदी में लिखा हुआ है.
1 अगस्त में बहुत मुझे खुशी हुई जब ये ऐसे जब पोस्टर आया था. I'm meeting you in person after Kala, the yeah. Kala promotions, and it feels so good. What a journey! Yeah. You know, तारीफें आपको हर बार मिली हैं, but you've always, whatever you've done, you've managed to get all the attention. चाहे लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे, everyone's talking about you. Tell me, in the stage that you're in, how do you maintain this कि ये शोर मुझ तक, this shouldn't पहुंचे. reach me, and this is good advice. I'll take that. I think I gotta give credit to my friends and my sister because you know these are the people that keep me grounded. They keep me happy, and then they make sure that nothing gets to my head or that I don't take anything too seriously. That I ये कैसे होता है? No princess treatment for you at no home. Like princess what? treatment at all. They'll just make fun of me even if I do something good. I have critics at home. I don't need to go out and be upset about other people criticizing my work. And I think it's important that they can be honest with me. You know, they are very brutally honest. If they don't like something, They tell me you? to my face that Tripti, this did not work for And us. they don't sugarcoat it Nothing. कि बुरा ना लगे थोड़ा प्यार से. They no? don't. And I feel good about it. I in fact have told them that you know you are the ones who have to tell me if something's going off the track. Because where else will you find that? Because I think with whatever's happened till now, post Kala, it's been a very, very good journey. I've Yeah, seen touch wood, ups and I've seen downs, and it's just something that you know gives you a perspective. It teaches you a lot. You know, you get to know what the audience is liking, what they're not liking, and I think नहीं किया होता तो पता ही नहीं चलता ना. फिर कभी ना कभी तो करना ही पड़ता. So I think as an actor, it's been a great journey, and I'm only grateful for it. But what you touched upon is so important कि अपने tribe की ज़रूरत होती है. बहुत You know, ज़्यादा, जो yeah. आपको समझे और in a way संभाल also. के रखे, yeah. Yeah, that's so true. Siddharth, in that sense, is that a common ground that you both connected with? Because आप भी बात करते हैं about the fact that you know when you don't belong to these big cities, you've seen a sort of life जो आसान है शायद उसके बाद उस तरह की कहानियों को पोर्ट्रे करना. आपका ट्राइब है आपके आसपास that keep you grounded and Always. I keep him grounded. She keeps me very grounded. Yeah, we, same friends, family, my cousins. When I go back, you're in touch with. Are they the same with you? Yeah. In fact, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ. अब जब सक्सेस आई है, इतने एक्साइटिंग स्पेस में हैं आप लोग बदल जाते हैं थोड़े आसपास के. ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? देखिए जो क्लोज सर्कल है वो तो नहीं बदला है. जो बाहर के सर्कल थे तो वो बदल भी जाए तो पता नहीं चलता कि बाहर के सर्कल अब बहुत दोस्त आ गए, बहुत दूर के कजिन्स आ गए, अब बहुत क्लासमेट्स आ गए. Has that happened? वो हुआ था, मतलब शुरू में होता है. एंड देन बीच में like see the thing is they always reach out if they like something. But my close circle is always there. Cheering for me, making fun of me, everything. And other than that, there's so many things we also have to kind of do that I don't get to pay attention to things outside that. So I have my own little circle, my own bunch of friends, my family, a few of my cousins that I'm very close to, and I keep and it's the same. They are the same. Like I've grown up with them, so they are the same. Professional advice के लिए किस पे dependent है? I know it's difficult to say your friends in the industry, but are there people who you listen to when they say this is the sort of work you should do or this is what you need to avoid? You of course ask your friends. I turn to my friends because Friends from the industry? no. No, अच्छा outside. Okay. Because they are also audience, right? They, and as I said, they watch everything as audience, not as my friends. Yeah. So it gives me a perspective, and I also listen to my gut a lot. You know, if I get a right feeling, then I go for it. Lovely. Then no matter what people say, there have been times, you know, I've said, Bulbul, everybody was saying, don't do it. I wanted to do it because I was feeling right about it. So yeah, I think your gut always tells you whether it's right for you, whether it's wrong for you, and sometimes, of course, it doesn't work, but it's okay. So her gut and her friends. What about you? I think जब पिक्चर चलती है तो कोई ज़्यादा एडवाइस नहीं देता. पिक्चरें नहीं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा एडवाइस मिलती है. Correct. Exactly. And that is a time when not to listen and just believe in your instincts.
बिकॉज उतार चढ़ाव तो आई थिंक ऊपर नीचे होता ही रहेगा, लेकिन अगर सबकी सुनते रहेंगे तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट विजन. आई फील how can a person give me a professional advice when they have not lived and seen the dreams which I have? They don't stay with me, so they're not responsible for my dreams. So they might give an opinion, advice, but I always kind of measure it in putting it in my own instinct, channels and seeing if it works or not. More than that, I feel like I observe a lot. More than a professional advice, I'm seeing what's happening, seeing the kind of cinema which is growing in India, outside India. So, I mean, that much sense I think we have to, because this is an art, what we do is an art field. So, अगर कोई advice दे भी देगा और वो बात सही है कि ये कर लो, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब तक अंदर से मन नहीं आएगा तो मज़ा नहीं है करने में. You won't be able to do it with honesty. और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलेंगे यार ये मत करो यार, ये क्यों कर रहे हो, छोटी फिल्म है. But ऐसा हुआ है? Have they मतलब हाँ, dissuaded you from something that नहीं बट वो कोशिश करते हैं, बट मैं करता हूँ जब मुझे मन होता है तो कि अपने हिसाब से ही करता हूँ. मतलब मुझे जो स्टोरी कनेक्ट हो जाती है, समझ में आ जाती है, जो मैंने जो जीवन देखा है, जो मैंने जितनी ज़िंदगी जी है, जो मुझे स्टोरी फील होती है मैं करता हूँ. नहीं तो कितना भी कमर्शियल हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या आती रही हैं जो मैं नहीं समझ में आता मुझे, तो मैं नहीं कर पाता हूँ. तो एक कन्फेशन सीरीज कर रहे हैं. Oh my God. ठीक है. ले आओ. पहला हार्ट ब्रेक. पहला heartbreak when I was in 8th standard. नाम नहीं बताना ना. कोई बात नहीं, अब तो बैठ के देख रहे होंगे आपकी हर फिल्म. My first heartbreak, I think when I was 21. Started late. Yeah. Started late, very late. At least that's what he's saying. Okay. On a scale of 1 to full-blown DDLG, how dramatic are you in love? How dramatic I was in love. I was. That's the answer. I was. Oh, अब He was. अब समझ मोक्ष की तरफ जाते हुए. नहीं, मोक्ष की तरफ नहीं. अब समझ आ गई है. क्या? प्यार जो है, हाँ. कंपेनियनशिप है, छोटी चीज़ों में होता है. लार्जर देन लाइफ सबने किया है. आई थिंक कॉलेज में आई वॉज वेरी ड्रामेटिक, वेरी वेरी ड्रामेटिक. मतलब मैं बाइक पे पीछे बैठा भी हूँ और उनका हाथ भी आ जाए मेरे ऊपर तो मैं गाने वाने चलने लगते थे. हमेशा मैं ड्रामेटिक विजन में ही उसको इमेजिन करता था. एंड देन धीरे धीरे फिर वो समझ में आता है कि It's not all that. हाँ, ये आपको एक्टर बनना है, मतलब आप फिल्मों में जाइए. असली लाइफ में प्यार बड़ा ही नाजुक होता है, मासूम होता है. Yeah. Lovely. I think we've all been through that phase. I've also been through it, but now I think I'm also very calm in love. Heartbreaks change everyone. Yeah. Suddenly everyone's very wise here. Okay, tell me the cringiest thing you've done in love. That hindsight में now you laugh at yourself. I have made my sister talk to one of my boyfriends because our voice would sound similar on the phone and I was too nervous to talk to the person. So I said, "You're good at this, please talk as Tripti." And then she's done that. And it worked. Wow. ये प्यार था इनका. आप बताइए. Cringiest thing. हाँ, वो नहीं, letter cringe थोड़ा है. Written नहीं, letters नहीं. Letters is beautiful. I think old school. I think cringe would be, हाँ, I remember. So basically किस्सा ही है छोटा सा. I think स्कूल का था. तो जो मुझे पसंद थी उनको मार्क्स कम आ गए थे और मुझे ठीक ठाक आए हुए थे. तो उन्होंने कहा कि पापा तो बहुत डांटेंगे घर पे. तो मैंने बोला लाओ पेपर, मेरा पेपर लो, अपना नाम लिख लो, तुम्हारा पेपर दो. और मैं उसका पेपर नाम हटा के अपना लिख के घर ले गया. मुझे बड़ी मार पड़ी और उसने मेरा पेपर दिखा के बच गई वो. इश्क में पिटाई आप मतलब बचपन से. क्रिंज है क्या ये? नहीं, पता नहीं. मैं 2 instances दूंगी and I want you to be therapist for my viewers and Wise Oh हो my गए. God, therapist. हमें तो आपके जवाब सुन के ये लगा. वो तो अगली वाली बताइए. अच्छा, कितने wise ये एक सिचुएशन आई है, आप इनको क्या एडवाइस देंगे, क्या बोलेंगे? We were on a break, she kissed someone else, is it cheating or no? ये तो भाई फ्रेंड्स का सवाल है. ये Yeah. टीम रॉस और टीम Team Rachel. What You are have to you? pick. I'm team obviously Rachel. Rachel, ना? Obviously Rachel. I am team Rachel. She was on a break, she kissed someone. But break मतलब क्या होता है break? मतलब break we are not together just. नहीं, मैं भी टीम I'm also Joey. team. Okay, not bad. I always post his hoodie, his hand, a car selfie, but he won't post anything saying कि नजर लग जाएगी. ले तो मैं हूँ. ये तो मैं Is that a red But flag or nazar not? is Tell real, us huh? that now. नजर is real, but I do Nazar believe is in real. नजर. मैं Yeah. नहीं, वो हाँ. post ही नहीं कर रहा, that's okay.
पोस्ट नहीं Post कर से रहा है क्या तो फिर है? लड़की को भी नहीं करना चाहिए. I feel you should also stop posting about it. हाँ. Then see Yeah. what he feels Yeah. about it. He vanishes without closure, but randomly sends a miss you text रात को 2:47. Just ghost him. It doesn't yeah. deserve it. Not cool. This is The biggest absolute red flag. Not cool. Not cool. unanimous there. Okay. Emotionally unavailable. She met my friends, family, colleagues, but never invites me anywhere. Yeah, again a red flag. I don't think that person She is never sure invites- about you. But she never invites me to meet her friends, Friends family, and family. colleagues. I don't think that मुझे person is. मैं बिल्कुल रेड फ्लैग है, निकलो वहाँ से. मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है. ओहो. प्लीज निकलो यहाँ से. But what was the toughest thing, honestly, to play the characters that you did? Can I go first? Yeah, go. I think the toughest part was to be able to get the choice of choosing a film like this. To be able to come at a point where Karan sir calls you and gives you, this film with an amazing script, equips you with everything that's needed for this film to be mounted, the best music, giving you the franchise value of Dhadak. Yeah. I think that is the toughest part. उसके बाद जो हमारा काम है, I think that's what we are here for. अब इसके Yeah. बाद भी आके अगर हम कहें कि यार Tough है. मज़ा नहीं, मतलब टफ है यार, ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, तो I think that is a little too pushing it. I feel the tough part has always been to be able to get scripts like this, and to be able to be in a position of choosing it and getting it mounted by a big producer and Z Studios, so that maximum number of people watch us. This is our dream, so I think we are living our dream, and I think we both are lucky to be able to pull this off, with the support of everything Beautiful. we have. I think he's given a beautiful answer. Of course, when you go on set, it's all play. Then the tough part is over. You just have to go and just be yourself and give your 100%. And I'm glad that we had all those workshops Yeah. that we did with Shazia just before starting the film. She made sure कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, ताकि जब हम कैमरा के सामने आए, it feels like we are all just actually in college and actually studying there in one law college, and we don't feel like अच्छा मैं इस इंसान को अच्छे से नहीं जानती, so I can't crack jokes with him. We were so comfortable. मुझे even when we had intense scenes in the film, we were just cracking up पीछे कैमरा के, and Shazia would sometimes have to be like, guys, please, I need silence, please be out. So it's easy to come out of characters. That's great. You I guys, mean, only because we had such people around, and only because Shazia created that environment, that safe space for all of us. मुझे याद है कितनी बार तो जब सिद्धांत के scenes होते थे, वो हमको allow ही नहीं करती थी इसके सामने. तो you can't come in front of him because you all will make him laugh, and I don't want that. You remember? And we would just. मुझे याद आया तू और आदि. Yeah, me and there's another friend of ours, Aditya Thackeray, who's an important character in the film, and we would just. There were times we would not stop laughing, and I watched the film and I was like, oh God, I was doing. It Unbelievable. takes you back to what you were doing at the moment, and I was crying while watching the film, and then I was like, oh God, I can't believe I was. तो अब तो practice हो गई है ना हंसने की, हाँ? You would crack हाँ, up in the नहीं, middle. मतलब टेक के बाद, But I think it's very important, because it just Yeah. keeps you fresh, it keeps you Yeah. alive, and then when you go for the scene, you're all in. अगर आप वो scene का pressure लेके बैठ जाओ एक मतलब corner में, सब- then you won't be able to Yeah. perform. Then you'll just be, there's just going to be a lot of pressure in your head. And I feel I give the credit to everybody who's a part of the film, because they just made it look so easy. And I have also realized by doing like something like Gehraiyaan was quite intense in terms of, and this one I feel सबसे ज़्यादा comedy ना intense sets पे होती है, actually, और सबसे ज़्यादा serious लोग comedy film पे होते हैं, हाँ. क्योंकि comedy का timing नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो It's serious business. is Yeah, also, and yeah. comedy is a tough. serious business, It's but tough to crack. yeah, but in these intense films, I've realized that I've had the best offset, experience. Lovely. I hope they release the BTS. It will, for sure. So good to know. Film के 2 महीने बाद लेकिन थोड़ा intensity में, Yeah. serious actors. Lovely. On that note, हम यहाँ से निकलेंगे, पर आपको ये बोल के कि हमें बड़ा मजा आया. And it honestly feels amazing to see the journey that Thank you you. guys have had. Somewhere when you win, we feel like it's our win too. और हाल ही में तो आपके स्टेटमेंट को अनुराग कश्यप ने भी बोला कि आफ्टर दैट अनन्या पांडे चेंज. अनुराग सेड दैट दिस समथिंग दैट चेंज्ड इन अनन्या फॉर द बेटर आफ्टर यू सेड कि जहाँ स्ट्रगल खत्म होता है वहाँ हमारे सपने शुरू होते हैं. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक उनकी खुद की मेहनत है. आई वर्कड विद हर
twice, and I've seen her. And she's She's also amazing. She's amazing, doing yes. really well, and इसमें ऐसा कुछ नहीं है. In fact, she had to battle it, fight it even more. So, in fact, it made it tougher for her. But I think she's amazing, and whatever she's done, I think it's absolute credit to her and her parents, and yeah. Thank you guys. Thank you so much. And really looking forward to 1st of August for Dhadak 2. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.